हाय हेलो हेलो एवरीवन। फिर से इस हफ्ते दिनेश और मैं अपनी बेटी श्रेजल के साथ स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर रीडिंग एनालिसिस मेंट फॉर द चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए। द हिंदू न्यूज़पेपर क्यों, एक बार फिर से। Yes, the Hindu newspaper tells us about things in detail. Other newspapers also, but this newspaper tells like we can understand more and we are going to take the newspaper that is for children, right? No, this newspaper is not for children, but we are going to take the section, the articles, the news that is pertaining to children. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हम नहीं देखेंगे, कुछ कुछ देखेंगे। तो श्रेजल, shall we begin with? Yeah, let's begin. तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि दिस इज द कवर शीट, और इस कवर शीट में वी डू हैव वेरियस न्यूज़। द वन दैट इज हाईलाइटेड इन ग्रीन दैट इज ऑफ जो कि सिंपल है, बच्चों के समझ में आराम से आ सकता है। दे आर नॉट सो मच कॉम्प्लेक्स इन नेचर, इसी के लिए हमने इसको अभी पिक किया है। सो हियर लाइज द न्यूज़ एंड हियर इज द डिटेल ऑफ इट। और यहाँ पे what has been done is that DU to have common entrance test. The last week it was there whether the DU is going to take the common entrance test or not. Some committee was established in order to assess whether the cutoff marks is that okay, or whether you should go for the common entrance test. That was the recommendation. So now in the today's newspaper it has come that DU is going to have the common entrance test. So this article, this news is all about that one. Yeah. So, the Academic Council of Delhi University on Friday passed a proposal to hold a common test for the undergraduate admissions to the university. So, that is there. Next, Rachel. Yeah. The community report, after analyzing the data of admissions done under the current cutoff system, said that as long as the undergraduate admissions in the university are cutoff based, there is no way the Fluctuations means the movement, the up and down, the high and low. Okay, that fluctuations, sometimes significant, can be avoided to maintain equity. So what did you understand? I understood like there's a data there and I'm going to analyze, and there's something about this cutoff system. Yes, something about the cutoff system. What is being told in the report that as long as these undergraduate admissions are cutoff based, there are chances that the disparity can be seen. And what was the disparity? Disparity means more and more people from one particular state would be coming, like the Kerala state or the Rajasthan board that was talked about, or the CBSE board that was talked about. So what has happened if there is a cutoff base? Then पता चला कि कुछ स्टेट से काफी बच्चे आ गए, कुछ स्टेट से बिल्कुल ही नहीं, because the state do have their state boards and the marking system of the state boards may vary. The nature of the questions may vary depending upon the state examination it is done. तो इसी को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया, ठीक है। But the question is, was the all agreeing? There was a committee that was formed, or there were panel within it, so were all agreeing to that? The answer is no. सबने ये नहीं एडवोकेट करा, रिकमेंड करा कि हमारा एक एग्जामिनेशन सिस्टम कॉमन होना चाहिए। कुछ लोगों का डिसएग्रीमेंट था। Why? Let's see. The dissenting members said to the report, common current this examination, a common entrance test, has based its findings only on the academic session 21-22, and that also was COVID driven. तो यहाँ पे उनके पास जो डेटा जिसके बेसिस पे कहा गया है कि दे एनालाइज द डेटा, आफ्टर एनालाइजिंग द डेटा ऑफ एडमिशंस डन, ये डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक साल का डेटा लिया, वो भी कोविड एरा का डेटा लिया। अब आप एक साल के डेटा लेकर के बोलते हैं कि नहीं, दीज वर द डिस्पैरिटीज दैट वाज सीन, सो दैट्स नॉट टोटली, शुड हैव मोर एंड मोर बेसिस इनटू इट, इजंट इट? अब एक चीज को देखोगे, बोलो कि ऐसा हो गया, you need to understand in a holistic way. Then only you can say that yes, this requires an improvisation. Otherwise it becomes you are just looking at a particular aspect and then say it's like this. जैसे किसी हाथी को आपने पकड़ा और उसके कान को पकड़ा और बोला कि ये तो सूप जैसा है, या फिर पूंछ को पकड़ा और बोला कि ये तो it's like a rope, ठीक है। So you need to gather more and more data in order to be confident so that you can analyze them effectively. ऐसे क्या होगा, कुछ देखा और कुछ देख करके आपने कुछ बता दिया। So that's why not all the members were agreeing to this one. So this is one of the aspects. Another one.
CET for undergraduate admissions will lead to mushrooming of coaching institutes that will be practically bad for socially and economically disadvantaged students and girl students, said Mithuraj Dushya, an academic council member who was among the signatories to the dissent note. तो यहाँ पे ये कहा है कि ठीक है, if you go for the common education entrance test, then you will have lots of small institution coming up, और वो आपको बोलेंगे कि ठीक है, I will give you coaching, ठीक है, we will plan because based on the competitive examination we will prepare you. तो फिर क्या होगा कि जो लोग कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ वही जा पाएंगे, और मोर ओवर फिर कोचिंग के पर्सपेक्टिव से क्या होगा कि एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा. सो दैट इज व्हाट इज नॉट बीन फेवर्ड की कोचिंग की अननेसेसरली मशरूमिंग, बिकॉज दैट विल नॉट फॉर एन अनइक्वालिटी. जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करेंगे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो फिर क्या करेंगे, उनको खुद से अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. ओके, सो दैट इज व्हाट्स बीइंग टॉक्ड अबाउट. सो अब आगे चलते हैं सिटी सेक्शन में, देखते हैं देयर वर अदर न्यूज but none of them were relevant as such, तो इसीलिए हमने लिखा है no news as such. Into the city section again, further page, no news. However, there are various articles that is being discussed, but कुछ खास नहीं है. आगे चलते हैं हमारा स्टेट्स में the same story. We have Orissa failed to retrieve the 456 crore. Gujarat High Court rejects the Ashrams bail plea, और आप announces second list of 30 candidates, gangs from Gujarat behind the recent robberies in Andhra Pradesh. So ये सब है, but no news as such. अब फिर आते हैं नेक्स्ट पेज में, and we do have the state section of the newspaper, और इसमें है हमारा SC to hear the Mulla Periyar Dam. मुल्ला पेरियार डैम, बिकॉज ये बार बार कंटिन्यूएशन में आ रहा है, तो इसीलिए मैंने बस लेटेस्ट अपडेट के पर्सपेक्टिव से इसको इंक्लूड करने की कोशिश की कि हुआ क्या. एज वॉज सीन कि ये राज्यसभा में बिल गया था, और राज्यसभा में क्या हुआ, पोस्टपोन हो गया था फॉर उसको तमिलनाडु के लोगों ने, उन्होंने उसको नहीं हियरिंग होने दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा ही देखने को मिला कि अभी जो उसकी सुनवाई होनी थी उसमें तमिलनाडु ने बोला कि वेट वी नीड टू स्टडी दिस एस्पेक्ट एंड देन वी विल कम विद द प्रिपेयर्ड वन. तो अभी आप हमें थोड़ा सा समय दीजिए. तो इसी के बारे में ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है कि मुल्ला पेरियार डैम, और इशू यही है कि ये केरला और तमिलनाडु के बीच का एक डैम है जो कि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, और ऑपरेट कौन करता है, तमिलनाडु, पर यूज करता है केरला, और ऑपरेट करता है तमिलनाडु, यूज भी करता है तमिलनाडु, लेकिन है वो केरला में. अगर कुछ प्रॉब्लम आती है डैम के कारण तो प्रॉब्लम केरला में आती है, और कुछ अच्छा होना होता है, पानी जाती है स्टेट को, बेनिफिट जो मिलता है वो तमिलनाडु के स्टेट के लोगों को मिलता है. तो इसी के लिए दोनों के बीच बहुत सालों से टसल चल रहा है. अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, तो यही इसी पे हमने दिखाने की कोशिश की है. पिछले जो हमारा न्यूज सेक्शन था उसमें हमने डिटेल में इसको कवर किया था, इसीलिए हमने उतनी डिटेल में इसको कवर नहीं किया इस आर्टिकल में. यहाँ पे अगेन यू डू हैव द तमिलनाडु, यू डू हैव द केरला, और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट यहाँ के आसपास ये डैम है, और इस डैम को लेकर के अभी हियरिंग उसी की अब लेटेस्ट है. तो सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे अजर्न्ड टू December 15. अब इसको डेट कब मिली है, December 15 की. सेफ्टी कंसर्न्स अबाउट द मुल्ला पेरियार डैम आफ्टर तमिलनाडु शॉर्ट टाइम टू रिस्पॉन्ड टू न्यू इश्यूज रेज्ड बाय केरला, क्योंकि केरला ने अभी न्यू इश्यूज रेज किया था, पानी के लेवल एक ऊपर चली गई थी, जिसके कारण तमिलनाडु ने विदाउट ज्यादा वार्निंग दिए हुए इट ओपन द डैम स्लुइस गेट्स. तो पानी इसमें आ गया. तो केरला का ये कहना था कि यू डू दिस बट गिव अस सफिशिएंट वार्निंग, और वो भी डे टाइम में करने का है, रात में नहीं करने का है. A bench led by Justice A.M. Kanvilkar initially means पहले, initially posted the case to December 11, but senior advocate Shekhar Naphade informed that the court that the fresh applications have been filed in case, and Tamil Nadu would like to have time to reply this. It's fine. ठीक है, तो अभी तमिलनाडु को पढ़ने का मौका दिया जाए, एंड इट विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. ठीक है,
केरला गवर्नमेंट मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट में गई थी क्योंकि कंप्लेन किया था कि नो प्रायर इन्फॉर्मेशन ऑफ इट बिफोर ओपनिंग द स्पिलवे शटर्स, जैसा कि मैंने पहले बताया है। तो उसी के आर्टिकल के बारे में है और ज़्यादा इस पेज में कुछ नहीं है। देयर इज इंटरिम स्टे ऑन फिलिंग ऑफ ट्रीज इन ओरोविले, तो उसके बारे में एक न्यूज़ है, दैट इज ओवर हियर। एंड देन यू हैव द कोल प्रोडक्शन हिट फॉर द सेकेंड डे इन सिंगारेनी, यहाँ पे है। और तीसरा फिर वेदा नीलम हैंडेड ओवर टू द लीगल हेयर्स ऑफ जयललिता। आगे बढ़ते हैं हमारा सेक्शन न्यूज़ की एडिटोरियल की तरफ, और एडिटोरियल में एक अच्छा सा आर्टिकल आया हुआ है एंड दैट इज रिलेटेड टू टीचर्स एंड मोर ओवर टूवर्ड्स द they're getting affected because of this COVID-19। तो well, COVID-19 में तो काफ़ी लोग अफेक्ट हुए हैं, लेकिन टीचर्स के बारे में यहाँ पे बात की गई। हमने स्टूडेंट्स के बारे में कहा है, हमने वर्कर्स के बारे में कहा है, हमने बिजनेस के बारे में कहा है, हमने कंट्री के बारे में कहा है। बट वन थिंग जो सामने देखने को मिला कि टीचर्स के बारे में कहा जा रहा था कि टीचर्स ड्रू सैलरी विदाउट मच वर्क। बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं है, तो टीचर्स को पैसे मिलते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो बहुत लोगों ने इसकी शिकायत करी थी और टीचर्स के बारे में कंप्लेन भी करा था कि टीचर्स, क्योंकि अब ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, पेरेंट्स घर में थे, तो टीचर्स की पढ़ाई को क्लोजली मॉनिटर किया गया। कहीं कहीं जगह पे वहाँ देखा कि टीचर की छोटी सी छोटी गलतियों पे भी पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते थे और उन्होंने फिर बताना शुरू किया। सो दीज ऑल थिंग्स हैज कम अप। तो उसी को लेकर के ये आर्टिकल है जहाँ पे बताया गया है द इम्पोर्टेंस एंड द सिग्निफिकेंस एंड द वे द टीचर्स गॉट अफेक्टेड इनटू दिस पैंडेमिक। ओके, so the school education sector in India too struggled during the novel coronavirus pandemic। तो ये तो हमें पता ही है। Next, India has an estimated 9 million teachers, but they are not homogeneous. Group in India means to say lots and lots of teachers are there, 9 million of them, but they are not all the same। कैसे सेम नहीं है? That is what's been talked about। Group in India, there are extremes. Those working in schools under the union government with better qualifications, working conditions, salaries, and systematic protection to those in low-fee private schools with abysmally low salaries, means very low salaries. Abysmally low salaries, poor working conditions, and no systematic protection. तो दिस इज व्हाट द कॉन्ट्रास्ट इज। एक तरफ आपके यूनियन गवर्नमेंट के टीचर्स हैं, दे आर द गवर्नमेंट्स वन फेवर्ड बाय बेटर क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज, वर्किंग कंडीशंस, सैलरी भी उनकी बनी रहती है। एंड द अदर साइड वो टीचर्स हैं जो कि छोटे छोटे स्कूल्स में पढ़ाते हैं, ठीक है, जहाँ पे उनके बारे में प्रॉपर वर्किंग कंडीशन नहीं है, जहाँ पे उनकी सैलरीज को भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। सो इवन द सैलरीज है दे आर वेरी लो। सो इन दो कॉन्ट्रास्ट के बीच में बात किया गया है। सो द 9 million टीचर्स आर देयर, दे ऑल डोंट एंजॉय द कॉमन बेनिफिट, बट इट डिपेंड्स फ्रॉम द प्लेसेस और द वे दे वर्क, ठीक है। फिर मीडियम रेंज में भी एक आता है जहाँ पे अर्बन प्राइवेट स्कूल्स फेस द न्यू टाइप ऑफ बुलिंग बाय बीइंग अंडर सच constant watch of parents who pointed out even that smallest tiniest mistakes including the variety of pronunciation in online classes। तो यहाँ से लेकर के भी पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती थी और टीचर्स को बार बार सुनना पड़ता है कि आपने ये नहीं, अब बिकॉज पेरेंट्स वर आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड एंड वो ऑब्जर्विंग व्हाट्स हैपनिंग, क्योंकि उनको भी एक समझने का मौका मिला, बच्चों को भी और टीचर्स को भी, और द वे हाउ स्कूल इज टीचिंग द kids। So the this peculiar, this particular, this unique, okay, this peculiar situation juxtaposed with media reports, means together with the media reports, okay, juxtaposed with media reports suggesting that teachers drew salary without any work led to much mental turmoil, a lowering of the self-image and self-respect। So what do you understand? I understood that they are telling that teachers को salary ज़्यादा मिल रही थी, वो काम नहीं, they were not doing work। So that is, yeah, it's related to that only, but this is what has happened is even media reports came out, and then there were the instances that has happened during the PT meetings, that is the parent the teacher meetings, और जहाँ पे ये बताया गया कि लेट टू टीचर्स को बहुत ज़्यादा मेंटल टर्मोइल में गुजरना पड़ा, परेशानी हुई,
means they are working hard, but still what's being happening is they are not acknowledged for the efforts in some cases. Okay, तो a lowering of self image or self respect, तो उसको लेकर के भी एक क्वेश्चन बनने लगा. So it's not happening uniformly, but what has happened because of this pandemic, the equations got a bit changed. Some of them got under scanner, and because of this, the article has come into and they have popped it. Okay, for many teachers, teaching is just not a profession but also a most rewarding work, as interacting with young children and adolescents being with a great pleasure or joy. तो बहुत से teachers इंडिया में है, they don't just go for money because they want to teach, they want to be connected with the children, they want to impart knowledge. ठीक है, तो इसके लिए वो जाते हैं शौक से. तो उनको अब ऐसा अगर होगा तो उनको तो सही में बहुत ज़्यादा खराब लगेगा. ओके, कि हाँ इस तरीके से प्रेशर आ रहा है, जहाँ पे स्कूल की तरफ से ही प्रेशर है और पेरेंट्स की भी तरफ से प्रेशर है, और बच्चे हैं कि बच्चे तो बच्चे हैं. ओके, तो ये है. इसी को हमने नेक्स्ट कंटिन्यू करा है स्लाइड में. Teachers, especially those working in high Poverty. High poverty means very low onto the income, where you do have not even money to get the basic needs like the food, clothing and house available. So that is called poverty. Poverty environments and with marginalized group. Marginalized means to the extent, extreme, some particular groups. Marginalized group face an inordinate amount of job stress. A lot of job stress was there. Amount of job stress. It is very important to recognize and validate their stress, bring it out and discuss it openly. So what is happening is, if there is a need to talk to the teachers, train them, not to pressurize them a lot, because they have also lost lot many things into the COVID. ठीक है, and they have done a significant efforts in this pandemic. ठीक है, जहाँ पे सिस्टम को थोड़ा सा व्यवस्था मेंटेन करना था, अवेयरनेस फैलानी थी, लोगों को क्यू में रखना था, लोगों को बताना था. वहाँ पे टीचर्स वर द वन along with the doctors and the police who were there educating people about the COVID. तो एक टीचर के प्रति भी हमें समझना पड़ेगा. That is what been talked about. Some steps that might be helpful include, तो यहाँ पे अभी हिंदू आर्टिकल जैसे एडिटोरियल में यही बताया गया कि फर्स्ट प्रॉब्लम इज टॉक्ड अबाउट, उसके बाद क्यों और कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं. Solutions is being demonstrated. So creating a space where teachers can talk about the daily stressors and their well-being and their peers in a supportive environment. Community of practice of teachers and teacher unions can take up this agenda of top priority. तो इस तरीके की बातें बोली कि जहाँ पे उनको भी थोड़ी सी ट्रेनिंग और थोड़ा सा उनसे भी इंटरेक्शन हमें करना पड़ेगा in order to lessen the pressure, in order to reduce the stress. Including mental health, well-being and burnout. Burnout management means you totally get exhausted. You said, oh, that's done, enough. Burnout management in teacher training programs and refresher training will go a long way in prioritizing mental health. So what's been talked about is to restore the mental health. How? So these are the way. Training program and refresher trainings will help them in order to restore the mental health. So that was the topic, says make a mental well-being of teachers a priority. Okay, so if we want to be thinking forward-looking, advanced society sensitive of challenges, a society in which children are safe, secure and protected with professionally well-trained teachers, then we know the ways of mitigating newer challenges, and these are the newer challenges that has come up. So एक बहुत अच्छी सोसाइटी चाहेंगे. अब टीचर ही अगर मान लो कि टीचर ही स्ट्रेस हो जाए तो बच्चे का क्या होगा, isn't it? They are going to bear the burn. तो इसके लिए बताया गया है कि it's better to look upon them also, and then the things will flow good. Then there is no alternative to making the mental health of educators in a system priority. So इस आर्टिकल में इतना कुछ बताया गया है, and that seems to be quite true. क्योंकि कोविड में तो प्रेशर और परेशानी सबको ही है. In fact, we'll need some sort of interaction and some sort of awareness and a lot more training. Next article is on Captaincy
Unlimited. तो इस आर्टिकल में what has happened is this is about the tests and the one day and the ODI series which India is going to play with. India is going to play with South Africa. तो इंडिया की टीम साउथ अफ्रीका जाने वाली है, वहाँ पे मैच खेलेगी और वहाँ पे अभी तक तो हमारे जो कैप्टन हुआ करते हैं दैट इज कोहली. Virat Kohli is no longer going to lead India in all the three formats. He is only going to lead India in test matches, one format. The other two formats, that is ODI and T20, Rohit Sharma is going to captain the team. So this is about the article. अब इसमें बताया गया why and how it has been thought of. ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्यों बताया गया है कि या why how. It's not a news, in fact news तो already हो चुका है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या रहे होंगे. Okay. They are going to South Africa, but Omicron. Yes, they are going to South Africa, but there is a air bubble agreement and they need to maintain those bubble protocols. और उसके बीच में they need to be very much protective. Omicron is there, but in spite of that, they have been playing test matches. न्यूजीलैंड तो भी इंडिया आई थी, ठीक है. इससे पहले इंडिया भी गई थी इंग्लैंड. So they have been playing the test matches. The thing is that it's being done under very strict norms. ठीक है. You cannot stop the things. You need to keep it moving, but with a tighter norms. अगला आर्टिकल हमारे नीचे आने वाला है दैट इज रिगार्डिंग हांगकांग में. वहां तो बिल्कुल चीजें बंद हो गई हैं. इट्स बीन ऑलमोस्ट क्लोज बिकॉज ऑफ नो टॉलरेंस टुवर्ड्स द कोविड, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स द कोविड. देखेंगे उस आर्टिकल को भी पहले ये, ठीक है. सो टेस्ट स्क्वाड अंडर कैप्टनसी ऑफ विराट कोहली set for the tour of South Africa, while Rohit Sharma would be the captain for the ODI and T20s. Turns. Okay. India could not have allowed two different captains to be in charge for T20s and or ODIs. Yes. Captaincy shift usually favor the younger players, but in the latest musical chair between Kohli and Rohit Sharma बहुत ज़्यादा एज हो गया 34 and there you are talking about two different captains. अगर एक कैप्टन नया रहे, एक कैप्टन मीन्स ज़्यादा एज नहीं हुआ है, कैप्टन इज पासिंग द बीकन, देन इट्स अंडरस्टूड. जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी पास इट ऑन टू विराट कोहली हु वाज क्वाइट न्यू एट दैट टाइम. जो रूट और योर मॉर्गन का हम देखेंगे टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड में भी. जो रूट इज द कैप्टन फॉर द टेस्ट क्रिकेट while Ian Morgan is the captain for the T20s and the ODI. Similarly हमारा Aaron Finch और ऑस्ट्रेलिया में भी है. So it's been talked about. So Pat Cummins, there are more overseas examples. Pat Cummins and the Aaron Finch, Joe Root and the Ian Morgan, and the closer home the duality between the MS Dhoni and Kohli. ठीक है. तो ये वहाँ पे अच्छा लगता है जहाँ पे one is an older, one is a younger needs to pick up from the older and then you can have a rotate. But यहाँ पे तो दोनों के दोनों same almost. Even the in fact Rohit Sharma is 34 years, is too old in fact. Moving further. India has had a splendid run in tests, but its inability to win ICC silverware, be it the Test Championship or limited overs title, remains an issue. Rohit Sharma and Rahul Dravid, the coach. Rahul Dravid, and expected to plug the gap. So what did you understand? I understand that there's a silverware ICC. Yes, the ICC trophies like the World Cup, like the T20 World Cup, which India, in fact, did not qualify for the semis also. And then you do have the ICC Test Championship, the Champions Trophy. So these are some of the knockout tournaments that happens. Unfortunately, under Kohli, India didn't win even one of them. Under MS Dhoni, we won a lot. We won the Champions Trophy, we won the World Cup, we won the T20. So that were the things that were there. तो इसी के लिए विजन हमारा है कि ठीक है, परफॉर्मेंस वाज गुड, इट वाज नॉट सो बैड, बट द थिंग इज दैट वी कैन गेट द ट्रॉफीज. अब नंबर अच्छे आते हैं, बहुत अच्छी बात है, वेल डन मेघला, यू आर टू गुड, बट यू आर नॉट गेटिंग द टॉप, द पर्ल पोजीशन. कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे. तो यही चीज है कि आती है, चीजें आती है, बिकॉज विराट कोहली इज वेरी सक्सेसफुल इन द टेस्ट फॉर्मेट. जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे जीतते हैं, जीत करके आते हैं. ही इज रियली मोर डायनामिक एंड इज मच मोर फोकस्ड एंड हैज शोन द रिजल्ट्स इन द टेस्ट मैचेस. लेकिन चैंपियनशिप ट्रॉफी थी वो न्यूजीलैंड को मिल गई, फाइनल में हम हार गए उनसे. तो ट्रॉफी नंबर 1 नहीं बन पाते हैं.
तो सब जगह बहुत अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड 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 गुड, बट एट द टाइम ऑफ ट्रॉफी ओह शिट शी डिड नॉट। इसी के लिए इस तरीके का एक्सपेरिमेंटेशन है। ओके, सो as captain, Rohit was magnificent with the Mumbai Indians in the IPL, and what is intended as to replicate the same sort of success. रोहित शर्मा को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है लीड करने की अभी तक, बट आईपीएल में ही इज लीडिंग विच फ्रेंचाइजी, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस? He is leading Mumbai Indians. That's what's over there. Mumbai Indians, okay? And the thing is that he has won it 5 times. सबसे ज़्यादा भी तो जीता है मुंबई इंडियंस आईपीएल में. And then you have चेन्नई सुपर किंग्स, समझो, लेड बाय धोनी. तो धोनी के बारे में तो सब जानते हैं. तो इसी के लिए रोहित शर्मा को एक मौका मिला है to do almost the same thing what he has done for the IPL. So moving further with the next sections, हमारा है caught in a zero COVID dilemma. इसी की हम बात कर रहे थे. इसी में जहाँ दिखाया गया, you know, this image is of airport, हांगकांग की, जहाँ पे लगभग 2 लाख लोग डेली हाउ हाउ करते थे. अभी मुश्किल से 1,500 लोग करते हैं. So that is all about in Hong Kong in China deserted because of the COVID. कारण क्या है? They have gone for zero tolerance towards COVID. बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स है वहाँ पे कोविड को लेकर के. आप एयरपोर्ट पे लैंड करोगे उसके पहले आपको बहुत सी चीज़ें करनी है, लैंड करने के बाद बहुत सी चीज़ें करनी है, और पॉजिटिव आया तो बहुत सी चीज़ें और ज़्यादा करनी है, नेगेटिव आया तो भी कंटिन्यूएशन है. तो इस कारण से द रीज़न बीइंग इज दैट दे डोंट वांट कि हांगकांग में जो लोग रह रहे हैं उनको दिक्कत हो, वहाँ पे कोविड स्प्रेड हो. इसीलिए जो भी बाहर से आ रहे हैं उनको एयरपोर्ट पे ही चेक कर लिया जा रहा है. ओके, तो इसीलिए इसका रिजल्ट भी दिखने को आया है. हांगकांग में बहुत ज़्यादा कोविड केसेस नहीं हुए हैं, डेथ तो बहुत ही कम हुए हैं. सो दिस बीन द रिजल्ट्स, इन फैक्ट दे हैव बीन टू गुड, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? दे हैड टू पे द प्राइस फॉर दिस वन. ऐसा नहीं कि यू आर डूइंग समथिंग and then you are happy with the other things also. नहीं. So this all things has been caught in a complete page ground zero fact check from the Hindu. ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है. It's interesting. Let's see. Hong Kong is one of the last few places of the world that is still following the stringent zero COVID policy. Abu Dhabi में भी almost same था. ठीक है, in the Gulf countries also it was almost the same, but it was not so stringent. In Abu Dhabi particularly it was stringent, but यहाँ तो बहुत ज़्यादा. Even Singapore में same चीज़ था, but they have got leeway, they have provided the leeways now, but यहाँ तो अभी भी है. Hong Kong's Czech Lapcock CLK airport is the emptiness totally खाली पड़ा हुआ है. emptiness. Hong Kong International Airport HKG, too frequent flyers, used to be among the world's busiest. It handled 1.5 million passengers in 2091, that is close to 2 lakhs passengers one day. ठीक है, और अभी 1500 peanuts में you have. Okay, तो that's what's being talked about. और ये 1 साल से लगातार not 1 year, it's almost 2 years now, continuously it's been doing this. अच्छी बात तो है, लेकिन you see the reality that it's getting affected. business वहाँ पे डाउन हुआ. ठीक है, the movement डाउन हुआ restriction के कारण. there were lots of some job losses also. movement बहुत हद तक कमा है, लोग उतने frequently नहीं जा सकते हैं. जैसे पापा भी फंस गया था ना एक बारी, आपको कोविड के कारण वहाँ पे रुकना है, और डाल दिया तो लंबे समय तक फिर तो इट्स इवन इफ यू आर नेगेटिव आई सेड, देन स्टिल यू नीड टू बी इन आइसोलेशन इन क्वारंटाइन. पॉजिटिव है तो फिर अलग से आपके लिए मुसीबत तो है ही है. सो दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. तो द एंटायर टर्मिनल हैज बीन ट्रांसफर्ड इनटू अ टेस्ट एंड होल्ड फैसिलिटी. इंडिया में भी टेस्ट एंड होल्ड फैसिलिटी, पर इंडिया में तो 6 घंटे के अंदर रिपोर्ट देकर के आपको निकाल देते हैं, क्वारंटाइन भी करते हैं. ठीक है, रिपोर्ट में पॉजिटिव होता है देन स्ट्रिक्ट मेजर्स आर टेकन, नहीं तो अगर नेगेटिव रिपोर्ट है तो यू कैन बी अंडर द क्लोज मॉनिटरिंग. बट यहाँ पे it's all the airport is test and hold. The departure gates have been converted into massive waiting halls. This is where passengers await their results with tests processed
at on the site laboratory. टेस्ट भी हमारे जो हैं वो ऑन द साइट लेबोरेटरी एयरपोर्ट पे इस्टेब्लिश की गई है, वहीं पे टेस्टिंग होती है और वहीं पे फिर रिजल्ट्स भी डिक्लेयर होते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टाइम. बट फिर भी देखते हैं डिटेल में. On arrival, every passenger is whisked into a makeshift tent for a quick nose and throat swab. अब nose and the throat, remember RT-PCR टेस्ट में जो टेस्ट होती है तो उसके लिए they are allowed to go for that particular zone. वहाँ पे उनकी RT-PCR टेस्ट या कोविड टेस्ट होती है. Swab, a series of decks and Then beacon where passengers fill in a multitude of forms. Of forms. Various of desks are there, and then you have to fill a form and another form and another form when you just land over there. Within an hour of landing in Hong Kong, travelers are issued a government-recognized vaccine certificate that lists the date of their doses, the type of vaccine, and where they had their shots, all prepared in advance. Form the online health declaration that every passenger is required to fill before boarding. So what is then done? Over here there are very strict measures. They are telling that you have to fill multiple papers after just coming. Then after before boarding, Not before boarding. It's on arrival when they arrive at the Hong Kong airport. So what you have to do? They have a quick nose and swab. They go for it. Then they are being given the vaccination certificate issued by the Hong Kong government. Okay, and these certificates are based on what they have uploaded. The passengers has uploaded before making a trip to Hong Kong. Before making the visit to Hong Kong, when they upload it, that has been read, reviewed, and then printed into a form of a government certificate. So even that comes into when they are undergoing these tests. It's very much strict. Yeah, no, even further. The certificate comes with a QR code that can be scanned and scored on Hong Kong Leave Home Safely Tracing app. So again, there is an app. जैसे कि हमारा इंडिया में आरोग्य सेतु है, अलहोस्ट ऐप was there in UAE. Similarly, यहाँ पे we do have a Leave Home Safe app. जहाँ पे the results are there, the vaccination records, the test results are displayed. And these app you need to show. Your status need to be shown while you are entering a mall or you are entering any cinema halls or any open gathering. Okay, so there you need to show this your status, whether you are positive or negative, and if you are negative then only you are allowed to enter. If positive then to le jayenge utha ke. Finally, every traveler's phone number is registered with the health authorities and checked to make sure they can receive test results and other public health alerts. So this is there. Once the forms are filled and Hong Kong bureaucratic machinery is satisfied, a surreal sight awaits passengers who are shut up. फॉर्म भर गया, टेस्ट हो गया, अब उनको एयरपोर्ट पे ऐसे करके बैठना होता है जब तक टेस्ट रिजल्ट नहीं आ जाते हैं. ठीक है, एक दूसरे को देखते रहते हैं, बिल्कुल खाली सूनापन वहाँ पे रहता है. into a cavernous big hall filled with a sea of desks. Travelers, pilots, air crew all sit in perfect silence as though there's a massive examination center and the examination is going on. So मोबाइल देख सकते हैं, obviously मोबाइल देख सकते हैं, नेटवर्क की तो होनी चाहिए. The same happened when I landed into Abu Dhabi airport. At that time it was a massive test procedure desk that was going on and you just go on from one time. Was it boring? It was at 11 o'clock I landed and then I was let to go in the quarantine center at 7 o'clock. So almost 8 hours. Over a nerve-wracking 5-hour wait of their test result, passengers watch anxiously at every few minutes. Health personnel, then they appear, the health personnel with the reports, and then they march to the desk, quietly ask passengers who have presumably tested positive to pack the bags, and then disappear. जो पॉजिटिव हो गया उनको तो जाओ आप कहाँ जाओ वो भी बताया इन्होंने, बट जो नेगेटिव है उनके लिए भी अलग चीज है. पॉजिटिव टेस्ट मीन्स दैट अ पैसेंजर कैन नीदर क्लेम्स इमिग्रेशन नॉर क्लेम द चेक इन लगेज. ठीक है, दे आर टेकन अवे इन एम्बुलेंस to a hospital in Lantau Island near Cheklapcock
एंड इट वाज बिल्ट फॉर द इंटरनेशनल अराइवल्स, और वहाँ उनको फिर क्वारंटाइन में रख दिया जाता है। अच्छी फैसिलिटी है, ठीक है, बहुत अच्छा है, बट थिंग इज दैट यू लूज योर टाइम अ लॉट। Yeah. There they have to stay for at least 24 days in hospital. Not hours, it's days in hospital, almost a month. Yeah, almost. While all close contacts, those they sat next on the flight, are taken to Penny Bay, another government biggest quarantine center from 21 days of isolation. तो जो बगल बगल में बैठे थे, जो उनके साथ कांटेक्ट में आए थे, उनको भी पकड़ करके फिर ले जाया जाता है दूसरे जगह पे, ठीक है। तो जो पॉजिटिव आए वो तो गए, जो उनके साथ बैठे थे मान लो वो भी चले गए, खामखा गए। This center is also located in Lantau, an island once famous for hosting Hong Kong's happiest place to earth, Disneyland, but now is a center for massive quarantine program. Disneyland? वहाँ पे था, बट अभी तो वहाँ पे क्वारंटाइन का है। इवन यूएई में भी देयर इज अ मैसिव क्वारंटाइन दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, तो वहाँ पे लोगों को जा करके रखते थे। फूड्स वर प्रोवाइडेड, द नेट्स वर देयर, इंटरनेट वर देयर, लाइव्स, एवरीथिंग इज देयर, बट द थिंग इज दैट यू लूज योर टाइम अ लॉट, खराब लगता है, in isolation. So if this elaborate travel procedure and the vast system that is in place to keep it running seems excessive, it has been key to ensuring Hong Kong extraordinary record during the pandemic. जब से कोविड-19 है तब तक उस रीजन में इतने पीपल थे, 7.5 मिलियन पीपल, ओनली 12,000 इन्फेक्शन। हमारे यहाँ तो 4 लाख एक दिन में वो आया था पिछले साल, सॉरी इसी साल मार्च अप्रैल में। Only 12,000 infection and only 213 deaths. कुछ ज़्यादा कम है, बहुत ही कम, and that is why it's zero COVID strategy, an approach predicted on maintaining zero local cases by squashing every outbreak with mass testing and quarantine. Certainly spread thousands of lives into the densely populated island. This island is really very dense populated, और यहाँ पे अगर outbreak हो जाता तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम आती, ठीक है। तो इसको लिए इन्होंने जीरो टॉलरेंस बताया, और जीरो टॉलरेंस के कारण क्या हुआ कि दिस इज द स्ट्रिक्ट मेजर्स दैट नीड्स टू गो थ्रू, ठीक है। सो मोर इज डिस्कस इनटू दिस आर्टिकल, कंप्लीट एक पेज का है, बहुत ज़्यादा तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट जीरो कोविड, जीरो टॉलरेंस, द पॉलिटिक्स ऑफ ओपनिंग एंड द इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी इज बीइंग डिस्कस इन डिटेल। ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो है द न्यूज़ सेक्शन। न्यूज़ सेक्शन में हमारा एक है कि सेंटर लुकिंग टू यूज द स्टबल एज अ बायोफ्यूल, giving our commitment for net zero. This is one of the resources that has been now being supposed to, और ये भी बताया गया है कि स्टबल बर्निंग को बार बार बदनाम किया गया है by the government being one of the sources of pollution. Okay, तो वो भी कहा गया है। तो Indian government is working on a plan to use the stubble as a biofuel and manure as part of an effort to deal with the stubble burning, which is often cited as a source of pollution in northern India, said Minister of Environment Bhupendra Yadav. Okay, Minister said that National Thermal Power Corporation, that is NTPC, which produces power, the electricity, okay, had procured खरीद लिया है 3,000 tons, like kg is a unit of weight. Similarly, when the weight is too much, then we measure in tons and quintals of stubble to be used as biofuel, and would study the results. A sum of rupees 700 crore had been allocated to get rid of the stubble. ठीक है, so this is what is being planned. तो इसी के बारे में आर्टिकल है, और भी काफ़ी न्यूज़ हैं इस न्यूज़पेपर में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो हमारा द न्यूज़ है, बट कुछ खास नहीं है। आगे भी देखेंगे उसमें भी न्यूज़ हैं, बट अगेन ये सब भी कुछ खास नहीं है। फर्दर आते हैं हमारा न्यूज़ सेक्शन में, एक आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट मीन्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चिल्ड्रन। अगेन बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स इसमें नहीं है, बट व्हाट्स बीइंग टोल्ड इज 80% ऑफ द फंड्स फॉर द बेटी बचाओ वाज स्पेंट ऑन मीडिया कैंपेन्स। फंड वाज अलोकेटेड, बट अनफॉर्चुनेटली वो फंड को प्रोपोर्शनेटली जैसे यूज़ होना था वैसे यूज़ नहीं हुआ, मोस्टली मीडिया कैंपेन में यूज़ हुआ। जैसे कहने का मतलब, आपको अगर कुछ पैसे दिए जाते हैं तो उसमें से आपको चॉकलेट लेने हैं, आपको उसमें से किंडर जॉय लेना है, आपको उसमें से लेज लेना है, आपको उसमें से लॉलीपॉप भी लेना है, लेकिन पता चला कि आपको जो पैसे मिले उसमें सारे के सारे आपने किंडर जॉय ले लिए, कितने मिला? तो वही चीज़ है,
The government spent 80% of the funds under the Beti Bachao Beti Padhao, that is BBBP scheme, on media campaigns and must now revisit this strategy and invest is measurable outcomes in health and education for girls. तो जिसके लिए पैसा दिया गया था उस पर पैसा खर्चा ही नहीं हुआ, बस पब्लिसिटी में पैसे निकलेगी सारी. The Parley Committee on Empowerment of Women has noted in its report table in the Lok Sabha. तो ये रिपोर्ट दिया है पार्लियामेंट्री कमेटी ने. ओके, नेक्स्ट. Okay. The committee is chaired by Hina Vijay Kumar Gavit, and the report is titled Empowerment of Women Through Education with special reference to Beti Bachao Beti Padhao. और ये क्या स्कीम था, तो ये देखते हैं कब आया था. This scheme was launched by Prime Minister Narendra Modi in January 2015 with the aim to address selective abortion and the declining child sex ratio. Means लड़कियों को मार दिया जाता था, लड़कियों को आगे नहीं पढ़ाते थे, तो उसके लिए ये स्कीम आया था और उसके लिए फंड्स अलोकेट हुए थे, पैसे दिए गए थे, सो दैट आइडेंटिफाई किए जाए कुछ 405 डिस्ट्रिक्ट्स में, 405 डिस्ट्रिक्ट्स में, and which was 918 girls for every 1000 boys in 2011. तो यहाँ पे देखो कि लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियाँ कम है, लड़कियों को अच्छी सी शिक्षा नहीं मिलती थी, तो इसी के लिए स्कीम आया था. बट उस स्कीम में क्या हुआ कि एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा हुआ, काम बिल्कुल ही नहीं हुआ. The committee noted that the massive spent on which was deposited advertisements was deposited were despite the clearly let down, despite though there was a formula, there was a thing that was let down कि पैसे ऐसे खर्च करने हैं, बट उसके होने के बावजूद भी मीडिया कैंपेन में पैसे खर्च किए गए. Was despite the clearly laid down formula for utilization of funds rupees 50 lakh a year in marked a district for utilization under 6 components. क्या था? पहला जो 16% है for the intersectoral consultation and captaincy building, capacity building, then 50% for inoculation or awareness, general activities 6% for monitoring and evaluation, 10% for the sectoral intervention in health, 10% for the sectoral intervention in education and 8% in flexi funds. So इस तरीके से इनका allocation किया गया था, इसके बावजूद भी हमने पैसों को पब्लिसिटी में गवा दिया. Of this, 16% is the intersectoral consultation of capacity building, 50% for innovation or awareness. हमने बहुत ज़्यादा awareness ही जब बता दिया. It was only capped for 50%, but mostly we have gone for awareness. Generation activity 6% for monitoring and evaluation, 10% for sectoral invitations in health, 10% for sectoral invitations in education and 8% as flex funds. Flexi funds. एक अगला आर्टिकल है फिर न्यूज सेक्शन में ही, एंड दिस इज अगेन एक बच्चे ने बदमाशी करी है. उसके बारे में, वो बच्चा कहाँ का है, उड़ीसा का. उसने बदमाशी क्या करी, उसने पीने के पानी में पेस्टिसाइड मिला दिया. और क्यों मिलाया? क्योंकि वो चाहता था कि स्कूल बंद हो जाए. Yes. Student in Orissa mixed pesticides in drinking water and offered it to classmates so that his school could remain shut for some time. The student had been taken admission to standard 11th in a particular high school and he went to his village on December 4 and returned on December 6. गांव गया था, गांव से आने की उसकी मन नहीं थी, लेकिन स्कूल खुल गया तो उसको आना पड़ा तो उसने सोचा फिर से है भगवान बंद हो जाए. बंद नहीं हुआ स्कूल. एक न्यूज़ आया था कि शायद स्कूल बंद हो जाए, थर्ड वेव आने वाला है. अगर वो थर्ड वेव नहीं आया उस तारीख तक तो उसको लगा कि ओह गॉड ये तो नहीं हुआ. तो फिर उसने अपना दिमाग लगाया. दिमाग क्या लगाया? तो पानी पीने के पानी में पेस्टिसाइड मिला करके अपने दोस्तों को, क्लासमेट्स को पिला दिया. उससे काफ़ी बच्चे जो हैं वो बीमार भी हुए हैं. और 11th ग्रेड के Yes. छोटे मोटे रहते थे, समझ में आता. 19 students fell sick after drinking water and are under observation. तो ये चीज है, बच्चे तो बच्चे हैं. नेक्स्ट है हमारा चाइना क्लेम्स इट्स द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. इस आर्टिकल को हमने थोड़ा कवर किया बिकॉज हमारी कंट्री भी क्या है, डेमोक्रेटिक है. डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में. That means democracy. या टेल डेमोक्रेसी में मतलब क्या? व्हेन people
among the people, it's ruled by the people. मतलब ऐसा नहीं there's a monarchy, एक राजा नहीं है कोई जो रूल करता है, that is from between us. It's for the people, not for their family. Okay, so this is what is a democracy is. ठीक है. Yeah. तो अभी एक यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएस में, you know, there is a conference something like going on where in India has been invited from other democratic countries. पाकिस्तान को भी invitation मिला था. ये यूएस की कुछ But Pakistan is joined. No. No ना? I'll not join. I'll not join. And चाइना को invitation मिला था कि नहीं? नहीं. चाइना को इनविटेशन और मिला रशिया नहीं, को भी नहीं. रशिया को भी नहीं मिला था. तो चाइना को इनविटेशन में नहीं मिला, रशिया को इनविटेशन नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान को मिला, पर पाकिस्तान ने ज्वाइन करने से मना कर दिया. हाउ इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इनटू इट. इसी पे चाइना कह रहा है और बोलता है कि नॉट यूएस, इट्स चाइना व्हिच इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. ठीक है, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो खुद में बड़ा हूँ. ठीक है, दूसरे बुलाते हैं तो वो बुलाएं, अपना मुझे क्या पड़ा है. वी आर द डेमोक्रेटिक कंट्रीज, व्हाई वी शुड गो ओवर देयर. इसी तरीके कुछ है. तो लेट्स सी. And the US President Joe Biden on Friday hosted world leaders, including Prime Minister Narendra Modi, on the second day of a democratic summit. China's government capped a week-long campaign criticizing liberal democratic systems by attacking America's democratic malaise. तो यहाँ पे चाइना ने बोला कि we are a democratic country which is for the benefit of the people, which takes care of the people. इस तरीके से आपकी जो डेमोक्रेटिक है that is ill practice, बेकार है, अच्छी नहीं है. और उन्होंने इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम से भी कंपेयर किया है. Yes. Okay, China's official media routinely point, Routinely, yes. Routinely point to India's political system being chaotic, or inefficient to justify why large developing countries are better off following China's authoritarian moves. Yes, तो इंडिया के जो वहाँ पे बताया है कि देखो इंडिया की देख लो डेमोक्रेटिक सिस्टम कितनी बेकार है. ठीक है, वहाँ पे कितनी इनएफिशिएंसी है. और कुछ दूसरे कंट्रीज है जैसे पाकिस्तान, उसके डेमोक्रेटिक मॉडल देखो. चाइना के देखो इट्स ऑथोरिटेरियन मॉडल. यहाँ पे हम काम करवाना है तो बस करवाना है, चाहे उसके लिए जो हो जाए. हांगकांग का देखा ना आपने, हांगकांग इज अ पार्ट ऑफ चाइना. ठीक है, सो दे सैक्रिफाइस्ड द बिजनेस. चाइना में कुछ ज्यादा ही बोल. और वो बताते हैं कि वी आर डेमोक्रेटिक. अब उनको जबरदस्त पकड़ करके किस दिन के लिए क्वारंटाइन में डाला गया फॉर देयर सेफ्टी. अंडरस्टैंड. लेकिन अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वी डोंट केयर. यहाँ पे तो फिर अपनी अपनी थॉट प्रोसेस है. So that is there. And then coming to the business, एक यहाँ पे आर्टिकल है that is from the cycle. हमारी जो एक साइकिल है EV साइकिल, ठीक है, T1 साइकिल्स की, उसके बारे में बताया गया है. और काफ़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब आने वाले हैं. तो स्कूटर्स आएंगे, साइकिल्स आएंगी, ऑटोज आएंगे, गाड़ियाँ आएंगी EVs की. So this is just one of the article that talks about TI Cycles of India, part of the conglomerate Murugappa Group. Formed the plans in the electrical mobility space with its popular brand Montera to lead the firm's electrical vehicle business. तो उसके बारे में बताया गया. और ये electrical vehicle क्यों? क्योंकि हमें जो fossil fuels है उस पर डिपेंडेंसी बढ़ानी है, घटानी है. Fossil fuels, right? So उस पे घटानी है. Okay, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में हमारा जो है वो बात हुआ है. उसके बाद हमारा आर्टिकल आता है ये वाला. स्पोर्ट्स सेक्शन में टेस्ट मैच हो रहा है. अच्छी बात है. किसके बीच में? इंडिया के बीच में. और तो नहीं है फिलहाल. इट्स बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, टू आर्च राइवल्स. ठीक है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का होता है मैचेस, उस तरीके से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के भी मैचेस बहुत ही टफ होते हैं. ओके, एंड अगेन दे आर द टॉप कंट्रीज प्लेइंग देयर टीम. और ये मैच हो रहा है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में. इंग्लैंड विजिट कर रही है एंड दे आर प्लेइंग ऑन देयर सॉइल. वहाँ पे इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग में तो 147 पे आउट हो गया था. ऑस्ट्रेलिया मेड 425, big lead they have taken. But England also didn't collapse. But सेकेंड इनिंग में अभी तक 220 उन्होंने बना लिए और सिर्फ 2 विकेट खोए हैं. और इस स्टेट तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा योगदान था जो रूट, कैप्टन ऑफ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया. Captain of
I think England. यस, ठीक है। और डेविड मलान, ओके, तो इनका योगदान था इस स्कोर तक ले जाने में। तो अभी 20 सांसें बाकी है, मैच खत्म नहीं हुआ है, इंग्लैंड अभी तक नहीं हारा है, खेल रहा है, ठीक है। और जो रूट के बारे में हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था, ही इज द वन हु इज नंबर 1 प्लेयर इन द टेस्ट मैच रैंकिंग, याद है जो हम रैंकिंग की बात कर रहे थे। बाटी भी न्यूज में है आज टुडे, Bati is there into the second page, who was number 1 in tennis ranking, ATP ranking, ठीक है। So she is also there. I wanted to ask, like, which is your favorite team, in the England or Australia? The favorites are obviously a match ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया का चांसेस ज़्यादा है जीतने का। लेकिन अगर इंग्लैंड जीत जाती ऑस्ट्रेलिया में तो वैसा हो जाएगा जैसे इंडिया जीत गई थी ऑस्ट्रेलिया में, एंड देन इट्स गोइंग टू बी अ रियल मूवमेंट, ठीक है। तो फेवरेट्स आर ऑस्ट्रेलिया, बट अगर इंग्लैंड जीतती है तो फिर इट्स समथिंग टू चीयर अबाउट, ठीक है। तो अगले सेक्शन में न्यूज़ के हमारा कुछ खास नहीं है, सो नो न्यूज़ एज सच, एंड देन वी आर इन द वीकेंड स्पोर्ट्स, जहाँ पे बताया गया है टू that even on down the wire, but it got too dirty. Reality check, not a stick check, about the junior hockey team. तो यही ज़्यादा है, इसके और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आज का सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, इतना कुछ कवर अप करते हुए और बहुत कुछ छोड़ते हुए भी 50 मिनट हो गए हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए, थैंक यू, Bye.